प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्कशीट 26 पर चर्चा करेंगे। आज की वर्कशीट लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आधारित है। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग रेस्पिरेशन को रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। रेस्पिरेशन is the process of biochemical oxidation of nutrient at cellular level to release energy for performing various metabolic activity. That means इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी लिबरेट करते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं अपने शरीर में उसको परफॉर्म कर सकें। As you know about that, humans perform the aerobic respirations. Aerobic respirations, that means they need the oxygen for oxidation of the nutrient to release the huge amount of the energy for carrying out different metabolic process. After that, we all of you know about that the humans or all the mammals carry out the process of respiration through lungs. That means the respiratory organ are lungs. So we are called as that we are performing pulmonary respiration, and in the oxygens is taken from the air, so it is we are also called as the air breathers. मतलब हम लोग लंग्स से करते हैं रेस्पिरेशन, हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स है, तो इससे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। और हम एयर ब्रीथर हैं, चूँकि हम टेस्टोल जो एयर होता है एटमॉस्फेरिक एयर, उससे हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। आगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की चर्चा कर रहे हैं तो इसके डिफिनेशन पर आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, इट इज द ऑर्गन्स सिस्टम्स दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, और इनहेलिंग ऑक्सीजन को लेने और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने, टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे का एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सके। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स। ट्रैक वो जो जिससे जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचती है, और दूसरा लंग्स। इन सब को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट मानते हैं, और हम इनके पार्ट और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। पहला जो पार्ट है जो बाहर हमें दिखाई देता है वो नोज। क्या है? नोज। नोज possesses a couples of exterior nostrils, जो external near southern nostrils होता है। ये बेसिकली टू लार्ज साइज अपर्चर्स होते हैं जो लोअर एंड ऑफ द नोज पर होते हैं, एंड these help in intake of oxygen. And these nostrils, the tiny hair follicles cover the interior lining of the nostrils, which act as a body defense against foreign pathogens, and the mucus secreted by them also prevent the dust particles for entry. That means it filter the air and prevent the entry of dust particles, as it is lined by the ciliated epitheliums, which mucus secreting cells. After the nostrils, the air enters in the nostril lead to the nasal passage, and these nasal passages are mainly responsible for conditioning of air. That means air conditioner is carrying out the air conditioner, and it brings the air at the body temperature by warming or cooling the air. That means to help in the warming or cooling of the inhaled air. After that,
the airs go to the pharynx, that means the nasal chambers open into pharynx, and the pharynx which have two openings, dorsal, which is the gullet, and ventral, which is called as the glottis. Gullet open into esophagus, glottis open into trachea, and a cartilaginous flap, epiglottis, guard the glottis to prevent the entry of food into trachea. Prevent the entry of food into trachea. Here we can say that, see the how can the epiglottis prevent the entry of food into the trachea. The epiglottis that means the common path for both the airs and food. It functions for prevent the entry of food particles into the windpipe. The epiglottis is the elastic cartilage. Elastic cartilage serve as the switch between larynx and esophagus. Larynx and esophagus. Then next part, the larynx. That means look at the neck regions and the pharynx lead to the larynx. It is also called as the Adam's apple, voice box, because it produces the sound, help in the production of sounds. It is the membranes of the pair of membranes, which is vocal cord, stretch in the internal cavity and partially close the air passage. These membranes can be relaxed or stretched. When the air passes over the vocal cord, they vibrate, and when the vibration takes place, it produces the sound. एक पेयर मेम्ब्रेन्स की पेयर है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो स्ट्रेच होती है इंटरनल इस कैविटी पर, और वो पार्शली क्लोज किया रहता है एयर पैसेज को जो उसके अंदर जाता है. जैसे ही वो स्ट्रेच हो जाएगा, उस रिलैक्स और स्ट्रेच जो स्ट्रेच हो जाएगा, तो जो एयर जाएगी उसके कारण वो वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा. दैट मीन्स द larynx, it is portions which rises and falls during the swellings of food particles. Again, after that, the air passes from pharynx and go to the trachea, and this trachea, the windpipe rises below the larynx and moves down to the neck. The valves comprises of C-shaped cartilaginous rings which protect it from collapsing. C-shaped means incomplete ring. Incomplete ring of cartilage keep trachea open, allowing the passage of air to the lungs. वो lungs तक air को जाने देगा, and also prevent it from collapsing when there is no air in it. एयर भी नहीं रहेगा, उसको collapse करने से बचाता है. इसकी खूबी है इसकी ट्रेचिया की. Then the trachea divided into two smaller tubes called a bronchi. That means the split into two tubes terms bronchi, which either enter each lungs individually, and bronchi divide secondary tertiary in bronchioles, which is further divided into alveoli. That means after entering into thoracic cavity, it can be divided, and the divisions led to the
secondary, tertiary, and after that bronchiosis forms, which further go to form the alveoli. After that, the alveoli, which is a single-celled, thin-walled balloon-like structure filled with air. That means balloon-like structure inside the lungs. And the large number of alveoli increases the surface area for the exchange of gases. Actual exchange of gases take place at the alveoli. At the alveoli. And one also part is the some part ribs which are not mentioned in here. The ribs with 12 pair of the bones that forms a cage in thoracic regions, and the lungs and hearts are separately placed in it, and the movement of the intercostal muscles attached to the ribs help in the breathing. This is important part of the human respiratory system because the movement of ribs, movement of the intercostal muscles led to the process of breathing. बिना रिब्स के, पसलियों के मूवमेंट के, इंटरकोस्टल मसल के मूवमेंट के ब्रीदिंग संभव नहीं है. फिर एक वर्ड इसमें आया थोरेसिस रीजन या थोरेसिस कैविटी. व्हाट इज थोरेसिस कैविटी? थोरेसिस कैविटी मीन्स द regions which is bounded by vertebral column on the dorsal side, ribs on the lateral sides, sternum on the ventral side, and diaphragm in the posterior side. We have diagrams. This is the thoracic region. Lower is the diaphragms, and the ribs in the lateral sides, साइड में होता है उसके. वर्टिबल कॉलम पीछे की तरफ है डोर्सल साइड, और स्टर्नम आगे की तरफ है. ये आपका स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम, ये साइड में वो नीचे हो गया आपका डायफ्राम. इसको कहते हैं थोरेसिस रीजन. थोरेसिस रीजन. फिर आ जाते हैं अब जो मेन पार्ट है आपका लंग्स. मेन पार्ट है जो आपका लंग्स. उस लंग्स के पहले एक और पार्ट की चर्चा कर लें, वो है डायफ्राम. डायफ्राम ये आपका diaphragms primary organs of respiration and located in the two sides of the heart, and it is a muscular portions that separate thoracic cavity and abdominal cavity. thoracic cavity and abdominal cavity, ये नीचे वाला जो होगा इसको abdominal cavity, ऊपर वाले thoracic cavity. इसको अलग अलग करने में ये मेन भूमिका निभाता है. देन दिस मस्कुलर पोर्शंस है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, एंड इट आल्सो मेक्स द चेस्ट कैविटी, एंड ड्यूरिंग इनहेलेशंस it flattens and increases the chest cavity so that the air sucks into lungs, while it relaxes during expiration. After that, the main and central part, primary organ of the human respiratory system, which is the lungs. Main, central, primary, we can say all this, because the chief center of the respiration in the humans, they are located in the thoracic cavity of the chest near the backbone. I already discussed about the thoracic cavity. Backbone on the either side of the heart. They are the pair of large spongy organs
mainly involved in the exchange of gases between the blood and the air. और ये जो एक्सचेंज होता है, ये सबसे बड़ा जो पार्ट है इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहीं पर एक्सचेंज होगा। पहले यहाँ की थोरेसिस कैविटी है, पता चल गया थोरेसिस कैविटी क्या होता है। डायफ्राम उसको थोरेसिस कैविटी डिफरेंट करता है, उसको सेपरेट करता है। और जो इसमें स्पॉन्जी ऑर्गन होता है जो है ये, उसका कारण है इसके अंदर पाया जाना एल्वुलाइज, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम करता है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो काम है एल्वुलाई के द्वारा होता है। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि जो लंग्स होता है इंक्लोज होता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स के द्वारा, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं प्लूरा। गुड। साथ में ये जो प्लूरास होता है प्रोटेक्ट करता है लंग्स को एनी मैकेनिकल इंजरीज, एंड ऑल्सो इट अलाउज इट फ्रिक्शनलेस, किसी बिना किसी घर्षण के उसके मूवमेंट को अलाउ कर, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को अलाउ करता है। देन द राइट lungs of man is larger and broader and heavier because they have 3 lobes. Right is larger, broader, heavier, 3 लोब होंगे, और लेफ्ट में 2 लोब, स्मॉलर, नैरोवर, लाइटर। ये इसके लंग्स के स्ट्रक्चर हो गए। इसमें क्या कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, द राइट लंग्स इज क्वाइट बिगर एंड हेवियर। जो राइट वाला होगा वो बड़ा होता है क्योंकि 3 लोब होते हैं, हेवी होता है। अब आ जाते हैं, एक वर्ड है इनहेलेशंस। व्हाट इज इनहेलेशंस? इनहेलेशंस मीन्स इनटेक ऑफ या इनटेकिंग ऑफ taken in oxygen from atmosphere, which is called as the inhalations. And exhalation means giving out carbon dioxide from lungs to the atmosphere. From lungs to atmosphere is called as the exhalation. First हम जो इस ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको एक उसके पैसेज को देख लेते हैं, किस प्रकार वो मूव करता है एयर हमारे में। उसको एक पैसेज को देख लेते हैं। ये है हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। देखिए एयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से चला, नेजल कैविटी यानी नेजल पैसेज में गया, फिर फेरिंग्स में आएगा, फिर लैरिंग्स में आएगा, उसके बाद ट्रेचिया में गया, उसके बाद ट्रेचिया में आया, ट्रेचिया से ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ब्रोंची, उसका ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वेओलर सेक्स। अब इंस्पायरेशन में जो भाग लेते हैं ऑर्गन्स, जो इस पर कर पाते हैं, उस कारण डायफ्राम्स देखिए, डायफ्राम नीचे कर जा रहा है। फिर और इसके कारण क्या होगा, ये एक एरिया जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं कंट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरी थोरेसिस कैविटीज के कारण एक्सपैंड कर जाएगी। उसके कारण उसमें प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका अंदर का प्रेशर कम हो गया वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण। तब यानी कि थोरेसिस कैविटी इंक्रीज हो जाएगी चारों तरफ, causes the expansion of lungs and the decrease the air pressure inside the lungs, then the atmospheric pressure. To equalize the pressure, the fresh air rushed into the lungs through the respiratory tract. This is called the inspiration. A second,
इसको कहते हैं एक्सपायरेशंस या एक्सेलेशंस। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए डायफ्राम्स रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि राइज हो गया, ऊपर के डोम शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डायफ्राम फ्लैटन हो गया था। रिप्स जो होगा इनवर्ड हो जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगा रिलैक्स हो गया, इसके कारण थोरेसिस कैविटी डिक्रीज हो गई, छोटी हो गई, रिड्यूस हो गई। दैट मीन्स द thoracic cavity decreases, reduce, and this lead to the increase the pressure. उसका increase pressure increase कर जाएगा inside the lungs than the atmospheric air. To equalize the pressure, the false air rushes out of the lungs from the lungs through the respiratory tract, which is called expiration or exhalation. This is the some of the differences given is thoracic cavity expand in the thoracic cavity contract, ribs lift off, ribs move downward, diaphragms becomes flat in shape, where diaphragm becomes dome shape, volume of lungs increases and the air enter to the lungs, volume of lungs decreases and air exits from the lungs. Also see this, the thoracic cavity and abdominal cavity, pelvic cavity is divided, and this is the actual diagrams, process of the inspiration and expiration diagram. This will the ears comes when the diaphragm is flattened. This is flattened. When the diaphragm flattens, the ears comes, and because the thoracic regions of the thoracic cavity increases, where the area of thoracic cavity decreases because of the diaphragms become dome shaped, and that due to the expiration. Answer the questions. First question is what is the function of alveoli? We deal with the structure of alveoli. The alveoli are balloon-like structure which are the thin-walled, moist with mucus vasculars. That means they're literally supplied with a network of blood cavity and filled with air. The function of alveoli, the alveoli function of alveoli is the alveolus, which is the singles of one alveoli is called as the alveolus, and provide the surface area for the exchange of gases. The large number of alveoli increases the surface area for the exchange of gases. The area increases up to the 80 meter square. The name the site for the gaseous exchange. We know about the primary organ for the respiration is the lungs, and which have the main structure which is called as the alveolus. That means alveoli. The gaseous exchange and exchange of gases take place in the alveoli. Again, third question, difference between inhalations and exhalations. He already deals about it. There are some of the differences given. Inhalations is the process of intake of the air from the atmosphere in the lungs. Exhalations is the process of expelling out of air from the lungs to the atmosphere. Inhalations is the active process because all the organs or the muscles and ribs contract, where the exhalation is the passive process, which body is relaxed. Ribs move upward and outward, where in case of exhalation ribs move downward and inward. Diaphragm contracts and get flattened, where the diaphragm relax and become dome shaped. In the intercostal respiratory muscles, which is the mainly external intercostal muscles, contract, where the volume of the respiratory muscles, external intercostal muscles relax. Next is the volume of the thoracic cavity increases in the case of inspiration. Volume of the thoracic cavity decreases in expirations. Volume of the lungs increases
and the air enter the lungs. When the volume of the lungs decreases, air exits from the lungs. The pressure of the thoracic cavity decreases where the pressure of thoracic cavity increases in case of expiration. Next, this is the process. How can the inspiration expiration take place? There are different diagrams. Here is the breathing in, the diaphragm contract, ribs, chest expand, same. Again, this is in the other diagrams, and this is the organs of our respiratory systems: nasal cavity, pharynx, larynx, then the trachea. Trachea divided into bronchi, primary bronchus, secondary bronchus, tertiary bronchus, bronchioles, and again terminal bronchioles, and which are going to the alveoli, and this is diagrams, and the primary arteries, pulmonary arteries, alveolus duct, alveolus, and where the exchange of gases take place in the alveolus. This is the diagrams. Drawable diagrams we have now to the हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना है जो नीट एंड क्लीन हो, अच्छा हो, साफ साफ दिखाई दे, सारे ऑर्गन्स लेवलिंग हो से, जिस कारण आपको कोई दिक्कत ना हो और साथ में आपके बार बार प्रैक्टिस करने पर ही ये डायग्राम को आप अच्छे से बना पाइएगा। फिर क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द movement of your stomach during inhalation exhalations. What can be the reasons behind your vibration? क्या रीजन हो सकता है, ऐसा होता क्या? The breathings करेंगे, breathe in the diaphragms tightness, flattens हो जाएगा, moves down. तो sucking air into the lungs, either diaphragms moves down. अब है क्या, जो ऐसे ही डायफ्राम हमको नीचे ले जाएंगे, टाइट होगा, फ्लैटन होगा, मूव डाउन करेगा, जिसमें एयर आएंगे लंग्स में, तो जो मूव डाउन करेगा तो पुश करेगा किसको? एब्डोमिनल कंटेंट को। यानी कि इस कारण क्या होगा? विच फोर्सेस द एब्डोमिनल वॉल आउट, इस कारण एब्डोमिनल वॉल बाहर निकल जाएगा। व्हेन वी ब्रीथ आउट द डायफ्राम्स, रिलैक्स हो जाएगा, एयर पासेस आउट ऑफ द लंग्स, एंड उस समय क्या होगा? एब्डोमिनल वॉल फ्लैटन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सांस लीजिएगा, आपका जो एब्डोमिनल वॉल है वो पाउट बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो उससे पुश करने के कारण ये आगे की तरफ निकलेगा। जैसे ही आउट हो जाएगा आपका हवा, आप जब एयर आपके ब्रीदिंग आउट कीजिएगा, यानी कि एयर को बाहर फेंकिएगा इन एक्सहेलेशंस में, तो फिर वो फ्लैट हो जाएगा, एब्डोमिनल वॉल जो होगा फ्लैट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, सोचता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।